Ma'am, you may start now. We can start. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I'm Professor Good morning, Rekha ma'am. Pande. Good morning, ma'am. Morning. I'll be taking the class Good on morning, ma'am. gender sensitization. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. I'll try to share my presentation. Just a minute, it's taking a little time. Can you see my presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your screen is visible now, but not presentation. Okay. Your PPT window is not open since now, I think. 1 minute, I'll try again. Fine. Yes, ma'am. It's Yes, fine. now it's visible, Yeah. ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Please let me know when I go off the screen because I don't know. I'm just sitting behind the laptop when it goes. So, today I'm going to speak on gender sensitization and why do we need it. So what I'm going to cover in my talk is first, what do we mean by gender sensitization? I'll discuss few concepts. Then, talk a little about the global gender gap and discuss areas where gender related problems exist. Then I'm going to talk a little about the pandemic and how it has impacted gender. And then what is the role that men can play in building gender equality and what are the new approaches that we can address. Now, gender sensitization refers to, sensitizing everyone about gender equality concerns. It also helps us to examine our personal attitudes and beliefs. We all have so many biases with regards to the other sex that we don't even realize it. So therefore, gender sensitization becomes a way of modification of behavior so that we have an awareness and we are able to look at with empathy the creation of gender equality. Now, gender sensitization is very important because it is seen as an instrument for social change. We are looking at, bringing in a social change, and it can also help both men and women concretize towards understanding the multidimensional role which women play. And it is also viewed as a very critical instrument to improve our knowledge about society, which at present is very partial, it's biased, and it only reflects one view of social reality, which is derived from a male perspective. So, how can we develop a new perspective? Definitely, one, by creating an awareness that there are gender inequalities, there are unequal relationship between men and women. We can understand the causes for these disparity. We can understand what women contribute to the social process, and then, facilitate social action. It can also help us understand what are the roots of inequality.
that has led to the invisibility, marginalization, and exclusion of women. Because the ultimate goal is to create a gender just society. Now, before we move further, we need to understand certain concepts and understand that, gender equality is something which is very important. It is, like a human right, and we cannot have any social or economic progress till we have gender equality. It is a belief that no one should have poorer life chances because the way they are born, because they have a disability, they have a different kind of sexuality. Gender equality recognizes that historically there were various groups who had certain protected characteristics such as race, disability, sex, sexual orientation, and all these groups have experienced social discrimination. And once we create awareness, we will be able to deal with this. Now, two concepts which we really need to understand: one is sex and the other is gender. Sex is something into which we are born. It is natural, it is given. And since it is natural, it is constant, it cannot be hierarchical. Though, of course, we say now there is a third gender, you can change your sex. But by and large, women are one sex and men are the other. Excuse me, ma'am. Excuse me. Yeah. Hello? Ma'am, it's your ma'am. Yeah, yeah, same question. What? Your slides are not moving. Sorry, I think this. 1 minute. I think I will use the smaller one. Is it moving now? Ma'am. Yes, ma'am. Now it's moving. I Yes, think ma'am. I'll use the small film because often it happens that, it doesn't. Ma'am, I think you Move. will share window Hmm? actually. If you share is your full screen, then we can see your presentation in full screen. Okay, 1 minute. Let me. Sometimes I don't know it has a problem. I don't know, entire screen there is a problem. Now your screen is visible, ma'am. Hmm. All right, ma'am. Can you Yes, see ma'am. it? Now it, yes, ma'am. Yes, Now yes. it's on full screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, Is ma'am. it Thank you. moving? Yes, Yes, ma'am. Go ma'am. ahead. Thank you. Okay, tell me. So, when we talk of sex, it is something which is natural. Men are one sex and women are the other. It has no connotation of a subgroup or minority. And the other is gender. Gender is something which we create in society. It's a socio-cultural aspect. And since it is something which is an artificial creation, we can learn it, it is changeable, and it is very hierarchical. To give you an example, women give birth to children because of sex, but women rear children, that is because of the gender. Okay, so that is the difference. And if you look at it, gender is more a creation of the mind, and it can be, sex is something through orientation and through expression. Another very important concept is patriarchy. When we talk of patriarchy, patriarchy is the rule of the father.
And it is a system, father, or, like in Kerala, the rule of the brother. And it is a system of social structure and practices in which there is male domination and women's subordination. It interlocks with many other structures like class, caste, etc. Now, having said that, it doesn't mean that I divide the world into two, that all men belong to one world and the women to the other, and all men are oppressive and women are oppressed. See, if you look at the social reform movement in India, it was all the men who came forward. Initially, women were not educated. So you had men like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Ishwar Chand Vidyasagar. They all took up the issue of women. Again, to give an example, if there is a factory owner, definitely, his wife cannot be oppressed by his chowkidar. But for the wife of a chowkidar, there would be a double oppression. She can be oppressed by the factory owner also and by her own husband also. So she is oppressed, one by her gender and one also by her class. Now, what is it that men control in patriarchy? Property, all economic resources, labor, reproduction, sexuality, mobility, where you can move or not. How do we see that? You see manifestation of patriarchy all around you. Not only in our society, all over South Asian society, there is a preference for a son. There is discrimination against girls for food distribution. There is restriction of educational opportunity for girls. You hear so much about domestic violence, sexual harassment, and rape. And there is, limited control of reproductive rights and property rights which women have. So, feminism becomes a very important tool by which we can smash patriarchy. Another very important concept that we need to know is socialization. Socialization is the whole process through which a child becomes an individual, respecting his or her environment, the laws, norms, customs of that. When we talk of gender socialization, it is a more focused form of socialization as to how different sexes of children are socialized into their gender roles, what it means to be a man or a woman. When a boy is born, we bring blue clothes. When a girl is born, we bring pink clothes. We give tea sets, dolls to a girl child. We give tractors and guns to a boy. So that is how we socialize. Look at these, the kinds of toys that we divide. How do we look at it? And we really do not experiment that both children can play with the same kind of toy. Now, what happens because of these concepts? We have divided the world into two. There is a public-private world. When we talk of the public world, it is the external world of labor, military, defense, decision-making, protection of livelihood, and it's all associated with men. The private world is the internal world of home, family, domesticity, reproduction, children. It is all associated with women. And we also divide competency. Rather than looking at it as human competency, we say these are feminine traits and these are masculine traits. Feminine traits are not being very aggressive, not independent, very emotional, subjective, submissive, illogical. They are home-oriented, they cry easily, and they are not that ambition. These are the things we attribute. Masculine, we say, are aggressive, independent, not emotional, objective. They cannot be easily influenced. They are dominating, logical. They never cry. They are ambitious. And what are the characteristics that we associate? Look at all our television serials. Women are very talkative, tactful, they are gentle, aware of others' feeling, look conscious, neat habit. They need security strongly. Whereas masculine traits are, they are not very talkative, blunt, rough, not aware of others' feeling. They are sloppy and they do not need security. If you look at gender roles, women perform so many multiple roles. They also have productive roles, reproductive role, community managing roles. So you have these triple roles which they manage. In fact, anthropologist Gail Rubin introduced the term sex gender system. He talks about the whole institutionalized system where resources, property, and privileges are according to culturally defined gender roles. Another very important aspect is gender mainstreaming. Unless we bring in women's concern,
as well as men's concerns, their experience into the main policies and programs in all our political, economic, and societal sphere, then both men and women can equally benefit by it. There has to be a strong commitment to gender mainstreaming, and it can be a very effective support. Two other very important terms are gender equality and gender equity. See, gender equality is a long-term goal. It means that there is an absence of discrimination based on sex. Equality between men and women exists where both men and women share equally in the distribution of power. Gender equity is the whole process of being fair to women. It ensures fairness that are, or strategies that will be available to compensate for women's historical and social disadvantages that does not provide a open operating level field. It is from equity that we will lead to equality. This picture really explains it. There are three children who want to watch a match, baseball match. And if you talk of equality, you give three stools to everyone. The younger, smaller guy cannot even see it. And the taller guy who doesn't need it also has a stool. But whereas if you talk to equity, the taller guy who can already see it, you don't give him a stool. One you can give single, the other who needs it, you can provide two. So that is what we mean by equity. Now we have to understand the Global Gender Gap Report. This is a very important report throughout the world. It was introduced by World Economic Forum in 2006. What it does, it captures the whole magnitude of gender-based disparities, and it tracks them over time. There are four major criteria on which it marks. These are gender gaps are marked. First is economic, education, health, and political criteria. Now, it's not possible to study each and every country. So what it does, it divides the world into 8 regions: East Asia and Pacific, Latin America, Caribbean, North America, Sub-Saharan Africa, and we are part of South Asia. Now, when you look at South Asia, it is the home to 816 million women, and 3/4 of them are in India. We have a huge population. And if you look at the Global Gender Gap Report, we are only one level above the MENA region. MENA regions are Middle East and Northern Africa. And only 61% of this gender gap has been closed. And what it says, since 2006, our rate of progress has been very slow in South Asia. In fact, it will take 71 years to close the gender gap equally. Bangladesh is doing very well. It has an overall score of 72.6. And only 1/7 of South Asian countries feature in the top 100 of the Global Gender Gap Report. Our rank is 112, though again this was in 2011. When you look at it in 2022, we have made a significant progress. In 2023, we have come to 35th to 127th rank. So we have moved further up. And what it says is, the economic gender gap is maximum. Since 2006, India has not been able to close this gap. And we have, there is hardly 36.7 parity in economic participation. 82% of the men are involved in the labor market, but only 1/4 of the women are involved. This is one of the lowest rate. Our rank here is 145th. And because women are so less participating in the labor market, their incomes are also less. We earn 1/5 of what the men earn. And only area where there is little improvement is political empowerment, because it says we have 25.3 parity in this area. The Global Gender Gap Report, World Economic Forum 2020, made a very important statement. It said that unless we have more and more women involved in the functioning of the economic system in the labor market, and we have a growth in female employment rate, there will be no reduction in the gender gap. And they say that this is something which is very important. Another very important point, it says that because of the health and the economic crisis, all of us have, come out of COVID-19,
again, there has been a greater increase in the gender gap. And they said that earlier also we had so many problems, but after COVID, this has really increased. Now, if you look at the areas where you have gender inequality, first is social, then political, health, education, economy. I'll be discussing all these. If you talk of the social, the first is our attitude towards the girl child. We want a world without a girl child. There is so much of a preference for a son in our society. This is driven by economic, religious, social, and emotional preferences. Parents expect sons but not daughters because there is a belief that they will provide for them financially and emotionally in their old age. And this is something, the whole society is a very patriarchal structure in India, and it has come down for more than 4,500 years. And today, more than 160 million women are missing in the Asian context. Not only India, if you look at it, China, Korea, other places also. And it has created a real imbalance. India has always been a patriarchal society, so there is a lot of premium paid to the boy. In the Atharveda, there is a prayer. When the wife becomes pregnant, both husband and wife go and pray to the sun god and they say, God, grant us a son here and a daughter elsewhere. So the birth of a daughter is very unwelcome. And in the Samved, the mantra, Brahmana also there is a prayer. The husband prays along with the wife. Unto thy womb let a fetus come, a male one as an arrow to a quiver. Let a hero be born to thee. There's another prayer which says, give birth to a male son, a son after him. Let a male be born. May thou be mother of sons. Today also what are the blessings? Dudo nahao puto falo. May you be the mother of hundreds of sons. If you read all our, epics and all, every family has so many sons. There is hardly any mention of daughters. So, the main reason for this is, according to Hindu philosophy, a human being goes through 4 stages of life. All of us are familiar with that. Brahmacharya, then you have grahast, then you have vanprasth, and then finally after this you enter into the vanprasth ashram. Now the grahast is a person who has to pay back 3 debts, one to God, to sages, and to ancestors. So, Hindu way of life, the son becomes very central to this. If a woman cannot give birth to a child, she is regarded as barren and a man can marry again. Again, if she gives birth to daughters, the man has a right to marry again. In fact, there are so many verses in the scriptures, and there are so many prayers for a woman. Pumsevansa vrat is one vrat which a woman can keep and have a male fetus. There are also other, prayers which say that if the woman does not behave properly, there is every chance that the male fetus in a womb can be converted into a woman. So there is a lot of, desire for, having a son. And in the Grahastha ashram, the son becomes central. Even when you have the sannyasa ashram, or, when you have the vanaprastha ashram where you start preparing for the vanvas, the father can put all his debts on his son. He cannot do it on his daughter. A son saves his father from hell. He is called Putra. Putra comes from the word Put, that is hell. A father can, throw all his debts on his son and he can conquer the world. There is a prayer in Vishnu Smriti which says, through a son, a father conquers the world. Through a grandson, he obtains immortality. And through a son's grandsons, he gains the world of the son. So, because there is so much of an importance given to son, today with lot of education, we have got, lot of economic status, we have got the means, medical, technology has also advanced, that systematically we have played with the sex ratio and abortion of female fetuses takes place. See, it is very normal to have for 100 boys, 105 to 107 girls.
because biologically girls are supposed to be more strong, they survive much more. And yet, though the government is aware of this, we passed the Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act in 1994, where sex screening is a crime. You cannot find out the fetus of a child. And yet I'm sure all of you must have seen that American documentary, Satyamev Jayate. So you had an episode on the sex ratio. If the after a sonogram, the doctor comes out and says Jai Ma, that means it's a girl, or he says Jai Mahadev, it's a boy. Then the parents can take a decision. Or if he says Laddu Khilao, it's a boy. If Barfi Khilao, it's a girl. So what, though it is illegal to disclose, the doctors and all have found so many ways to deal with it. And the moment a girl child is born, we treat her less than human. Discrimination begins even before birth, where we don't even allow her to be born. There is reluctance to seek medical aid. She's breastfed for a shorter time. They are easily withdrawn from school if the parents are working and they have to work for their living. And what the girl learns in the family are gender roles that are conceived and taught in a very complex set of relationship in family and society. So, the whole way in which the girl child grows up, she grows with a very low esteem. She grows with the notion that she has temporary membership in her natal home. She has to be disposed of early. There are so many sayings. A daughter is like ghee. Both are good to a point. If you do not dispose them of, they will start stinking. Look at India's genocide against the girl child. You can see China, South Korea, but we are at the uh, um, top of the list. If you look at the map of India, two states in Gujarat, Haryana, and Punjab, the sex ratio is for every 1,000, we had less than 841 girls. And if you look at the sex ratio right from 1901, for every 1,000 boys, we had 972 girls. It keeps on reducing with more and more prosperity. By the time you come to 2011, for every 1,000 boys, 914 grow. It has slightly increased now in recent time, 2022-23, but not very significantly. Look at the falling number of girls from right 1961. This can be seen in our proverbs. I do a podcast in which, I have collected, I will share the link with you after the class. There are so many proverbs, not only in India, but all over the world, how we look upon women. And that really shows the attitude of the society. In India, these are proverbs from Telangana, in Telugu. Bringing up a daughter is like watering plants in another's garden. If you tell lies, you will get a female child. It is better to be born in a tree in a jungle than to be born as a girl. It is easier to perform Ashwamedh Yagya, which is a very difficult yagya, than to perform a daughter's wedding. And I'm sure all of you come from different regions. You can share with me. There are so many, whether it is Punjab, Haryana, Rajasthan, everywhere we have these proverbs related to girls. Today we have commodified women. The advent of globalization has led to this commodification. The whole beauty industry churns out fashion products at a mass scale. What we have done is we have converted beauty into a cult. Women are only presented as sex object. Either she's busy selling everything from, LIC to petrol to paint, or she's seen busy in the kitchen, enjoying the fragrance of the clothes or washing vessels cleanly. They are not shown as builders, achievers, and leaders. So women becomes redundant beyond looking good. We have these so many gender stereotype. Look at these images that you have. Can you hear me? Are the slides moving? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Yeah, Now, if you look at our media, see if you do a content analysis of mainstream media, we can see that women are only to be seen. They are not to be heard. Their faces adorn newspaper. However, on national, international issues, they totally fade out. Even when the news is about them, it only gains prominence if there is a male authority who is presenting it on scene. By and large, we have ignored women.
and in the transmission of societal values and norms. Because the reason media ignores women, they think they are not intellectually capable, they are not great decision makers, and media is controlled by business minded people, and there are few houses who control it, and they are interested in TRPs. Even if you look at it, look at all the serials. Ekta Kapoor has so many serials, women are shown as scheming, always, fighting, trying to harm others. So this is how you are saying. Another very important aspect is gender violence. See, many forms of violence against women and girls can be understood as gender-based violence. So, this violence can result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women. And it can deprive your liberty. In fact, we have become so immune to this violence. Every day in newspaper, in television, we see so many incidents. We kind of just, overlook it, and it only becomes like a statistics. Unless a case like Nirbhaya comes where the whole country is jolted and, laws are changed. Today, you find violence all over. First, it starts in the family, in society. It cuts across income, class, religion, culture. And the main reason for violence is कि एक unequal power relationship है दोनों, men or women में. Our whole notion of sexuality, cultural ideology, the doctrine of privacy is important. How do you measure violence? ये जो dark gray area है, ये official statistics है. इसके बाद अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है, वो सेकंड लेवल पे है. फिर अगर हम सर्वे करते हैं तो हम थर्ड लेवल पे आते हैं. लेकिन जो आप बाहर का एरिया देख रहे हैं, ग्रे एरिया, वो एक्चुअल वायलेंस है. देखो, जब भी वायलेंस होता है इमीडिएटली तो औरतें जाके कंप्लेन नहीं करती है ना. सो वेरी फ्यू ऑफ दीज केसेस कम टू द पुलिस स्टेशन. एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि एशियन कल्चर में violence ज्यादा है compared to other cultures in the world. Why? Because we have defined masculinity at the expense of women. A man's honor rests in the women. आज क्या होता है, जब भी communal clashes होते, caste clashes होते, सबसे पहले औरतों को पकड़ के उनको रेप किया जाता है. और बहुत बार सेक्सुअल वायलेंस इनिब्रेशन लिकर की वजह से भी होता है. ये हमने पार्टीशन से सीखा है. पार्टीशन के टाइम में क्या हुआ, हिंदू आदमियों ने मुस्लिम औरतों को पकड़ा, उनका रेप किया, उनको उनके बॉडी पार्ट्स काट दिए. मुस्लिम मेन ने हिंदू औरतों को पकड़ा. और इस तरह से ये नहीं था कि ये जो हिंदू और मुस्लिम आदमी थे वो उन औरतों से बदला ले रहे थे, बट they wanted to send a message to the men in that community that you are not man enough to protect your women. तो ये इस वजह से ये बहुत वायलेंस जो है women के अगेंस्ट बढ़ गया है. जो हमारा सारा सोशलाइजेशन प्रोसेस है, किस तरह से हम लड़कियों को बड़ा करते हैं, ये एक बहुत इनइक्वालिटी हमको सिखाता है. अपर क्लास डोमिनेशन, कैपिटलिज्म, इसकी वजह से भी वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. टुडे इफ यू लुक एट इट, चाहे होम हो, स्कूल हो, वर्क प्लेस हो, पब्लिक प्लेसेस हो, सब जगह आपको वायलेंस दिखता है. कहीं पे ओवर्ट है, कहीं पे हिडन है. I was part of a lot of sexual harassment committees in my university. और आज हम देखते हैं कि जब साइबर क्राइम भी बहुत हो रहा है, जो कंप्यूटर के पीछे बैठा रहता है वो सोचता है कि आई एम एनोनिमस, दे कैन डू अ लॉट ऑफ वायलेंस. अब हमको ये समझना है कि वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि एक आदमी एक औरत को मारता है, बट इसका बहुत इम्पैक्ट होता है. चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, चाहे हम वायलेंस बाहर की बात करें, इसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट है. क्योंकि जब औरतें कंटिन्यू टू बी बीटन है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इन देयर बॉडीज. सो व्हाट एम्पावरमेंट कैन वी हैव? ये हमको एक इनइक्वालिटी सिखाता है सोसाइटी में कि कि विद वायलेंस यू कैन गेट अवे विद इट. 1994 से पहले हम लोग जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते थे, we were always talking of inter-border, cross-border terrorism, we need security, international borders. But UNDP for the first time in 1994 said, human security has to start with the family. पहली बार उन्होंने नेशनल लेवल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन डेली लाइफ में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया. And then we brought down human security to human level. Democratic processes कोई भी कंट्री में तभी strengthen होंगे जब women के against violence नहीं है.
वायलेंस का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है. There is an organization called Institute of Economics and Peace in the US. It has calculated that violence costs every year 14.76 trillion a year dollars for every person who is alive. If we calculate it in rupees, it comes to more than 1 crore 48 lakhs 811 crores. तो ये जब हम इससे हम कभी पॉवर्टी से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना इकोनॉमिक कॉस्ट आप दे रहे हैं. अगर वायलेंस के बाद उस औरत को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो हॉस्पिटल एडमिट होती है, तो वहां पे भी कॉस्ट होता है. अगर उसको डिवोर्स लेना है, हस्बैंड से अलग होना है, तो लीगल कॉस्ट भी आता है. अगर वायलेंस होता है, वो औरत को मारा जाता है, तो वो काम पे नहीं जा सकती है. तो इट इज अ लॉस नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयर बट इवन द एम्प्लॉय जिसने उसको करा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वायलेंस का एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है, एक सोशल कॉस्ट भी होता है, क्योंकि हम फैमिली को इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बताते हैं. और अगर हम ये एक फैमिली में बच्चे देखते हैं कि उनके फादर केवल एक माँ को एक थप्पड़ मार देते हैं एंड ही कैन गेट अवे विद इट, तो वो क्या सीखते हैं कि हम मार करके वी कैन ऑलवेज गेट व्हाट वी वांटेड. सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. What decision can a woman take with regards to health, nutrition, education when she is facing violence at her home? It limits her decision about reproduction, health outcome, and any negative effect. तो इसलिए हमको वायलेंस से जब हमको डील करना है, हमको ये याद रखना है कि इसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, एक सोशल कॉस्ट है, एंड इट इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वी हैव टू से नो टू जेंडर वायलेंस. अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको वायलेंस से डील करना पड़ेगा. एक हमारा जो कल्चर है वो बहुत साइलेंस का कल्चर है. औरतें क्यों चुप रहती हैं? या तो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, बच्चों की वजह से, और बहुत बार औरतें सोचती हैं कि हम फॉल्ट पे है. एक रिपोर्ट आई थी गुजरात से, वो औरतें कहती है जब तक आदमी हमको मारेगा नहीं वो कैसा मर्द है. तो ये हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इसको एक इनोवेटेबल सोचते हैं. मेनी वुमेन थिंक दैट दे कैन नॉट एस्केप देयर लॉट, एंड सो ये कल्चर ऑफ साइलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड जो है वो साउथ एशिया है. इफ यू लुक एट द life expectancy of men when compared to women, because I told you in the beginning, women have a genetically biological advantage. They can resist infection, malnutrition right from the infancy stage. Developed country mein women live 7 years more than men, but in South Asia women are living only 1 year more than men, and this is the lowest in any region in the world. Africa ka bhi statistics humse bada hai. These are two of my books on gender violence, and which we did as part of the Women's World Congress. एक मेजर इशू जो वर्ल्ड में आज आया है ट्रैफिकिंग. प्रोस्टिट्यूशन तो आप लोग जानते ही होंगे, और प्रोस्टिट्यूशन में हम मान के चलते हैं कि विमेन इज देयर आउट ऑफ हर ओन विल, विच मे नॉट बी ट्रू ऑफन. बट ट्रैफिकिंग जो है वहां पे औरतों को बहला फुसला करके लिया जाता है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स ट्रेड. Today, there are different views. There are a group of people who say in the world we get maximum money through arms trade and illegal drug trades, and then third from trafficking. There are others who say no, trafficking generates more money. But what is important is when a man is caught in arms trade or drug trade, they are put behind bar. But if a woman is caught in trafficking, she is the one who's put behind bar, and not the man who, or the women who traps her into trafficking. Today, you have trafficking at different levels: local, inter-district, interstate, cross-border. And it has really emerged as a major issue. मेरी अपनी किताब में जब मैंने देखा था, ट्रैफिकिंग से 10 लोग कमाई करते हैं. A girl who's identified in a village, there is a recruiter, buyer, seller, transporter, harborer, financial, brothel keeper, pimp, और फिर फाइनली वो क्लाइंट के पास जाती है. तो इतने लोग कमाई करते हैं उस लड़की से. और आज आप वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिकिंग है. लेस डेवलप्ड रीजन से मोर डेवलप्ड रीजन. इंडिया में
आपको नेपाल से, बांग्लादेश से आते हैं. From Africa, they move into Europe. From America, Latin America से they are coming into US. So the less developed a region, more trafficking takes place into the developed region. And this girl, do we call her a victim or is she an accused? You know, the person who's in trafficking is powerless, helpless, choiceless. She has debt bondage, she's intimidated, threatened, enslaved, and there is so much of exploitation. This is my book on trafficking, which I published in 2016. In India, you know, we have traditional forms of prostitution. See, they didn't start as prostitution if you look at the Devdasi system. In Andhra Pradesh, you have, you know, it was a very prominent system. Then you have the modern versions of Jogani, Matarammas, Domarammas, Basavis. And when the British came into India, all the patronage to temples was pulled out. So many of these girls got converted into prostitution. And today, you know, it was very easy for them to transit into trafficking. This is our book on Devdasis, which we published in 2017, along with a student of mine. एक और बहुत important aspect which we need to understand is sexual harassment. You know, it is also kind of gender violence. Before we gave sexual harassment a name, you know, especially when, if you look at me, when I was young, I was growing up, we just called it life. You cannot do anything about it. Boys will tease you, boys will, trouble you, and you have to deal with it. But first time in 1978, Lynn Fairley introduced the term in Sexual Shakedown when she wrote this book. In 1979, Catherine McKinnon published another book called The Sexual Harassment of the Working Women. And after this, you know, sexual harassment was a term where a lot of key legislation happened, a lot of feminist theorization happened, and this concept became popular. If you look at the reality check, you know, agar ek woman harassed hoti hai, she may lose her job, she may quit or protest, or she may just quit. Many feminists call it psychological rape because it leads to a lot of nervousness, loss of self-esteem, confidence, guilty feeling. It restricts a woman's mobility, late night shift. She cannot use public transport. आई डोंट नो आप लोगों ने कितना ने सुना है, एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था जो फाइन अब्रॉड से आया था. इट वाज कॉल्ड टेक बैक द नाइट. हर जगह इसके मार्चेस हुए थे. तो इसमें ये कहते थे कि रात का टाइम औरतों के लिए क्यों नहीं है. व्हाई आर नाइट्स नॉट सेफ. अगर आप 8-9 बजे कहीं भी निकलिए, मोस्टली यू विल फाइंड स्ट्रीट्स इन empty. You will not find any girls walking in them. And so it restricts a woman's mobility. The victim turns into a wrongdoer. It has, you know, a lot of impact on sexual harassment because when you sexist remark, display of pornography, you know, physical contact, brushing against a woman, it has a lot of impact. So like I said, it restricts a woman's mobility, victim is turned into a wrongdoer. There are so many myths which are created around sexual harassment. Many think that, oh, it's harmless to women, and women who object to it have no sense of humor. But women are seen as Eve temptress. It belittles women. मुलायम सिंह ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे. You know, rather than thinking कि हमको उनको कंट्रोल करना चाहिए, they should learn how to behave properly. अगर आप ये excuse दे रहे हैं कि लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे, how can we even deal with it? Many think it's a personal problem between two individuals, but it is a serious public problem that needs public solution. Me Too movement जब हुआ था, बहुत लोगों ने क्या कहा था कि अरे women use sex to go ahead. And then they complain of sexual harassment. Why did these women wait 15-20 years? See, that time all these women were young. They were trying to build their career. They didn't really want to, they could not take these men who are powerful. कितने powerful आदमी उसमें का नाम उसमें आया था, साजिद अली, नाना पाटेकर, जो हमारे अकबर, and plus, foreign में जो producer थे. So with these women, young 23, 24, they could only speak about it 15, 20 years later.
बहुत से हम ये इसलिए ये कहा जाता है कि women use sex to go ahead, but it is not true. There is also a myth that prostitutes cannot be harassed, but they are regularly harassed by police, middlemen, client. हमारी फिल्मों ने भी एक इतना बड़ा मिथ क्रिएट किया है. फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि वो लड़के जाके उसको तंग करते रहते हैं. शी कीप सेइंग नो, बट इसका मतलब फाइनली शी विल से यस. और ये बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरल फ्लर्टिंग दिखाते हैं. वही लड़की को तंग किया जाता है जो सबसे खूबसूरत होगी, जो सबसे इंटेलिजेंट होगी कॉलेज में. एंड दे थिंक दैट वो शुरू में वो हेट करती है, बट फाइनली शी फॉल्स इन लव विद अ हैरेसर. और बहुत सी जो एक और मिथ है कि बिकॉज विमेन वेयर क्लोथ्स, रिवीलिंग क्लोथ्स, सिंगल, डिवोर्स हैं, इसलिए उनका हैरेसमेंट होता है. आज हम पॉलिटी की बात करें, हमने 73rd 74th अमेंडमेंट तो दे दिया. गांव लेवल पे तो हमने इतनी औरतों को पंचायती राज में रिप्रेजेंटेशन दे दिया. बट आप लोगों को मालूम है विमेन रिजर्वेशन बिल का क्या हुआ है? 25 साल तक लटकता रहा. अभी भी 2024 में वी विल नॉट गिव रिजर्वेशन टू विमेन इन पार्लियामेंट. पंचायती राज में इट वाज वेरी इजी, क्योंकि वो दे आर नॉट मेकिंग पॉलिसीज, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज. पंचायती राज में तो आपको केवल इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां तो हमने बड़े इजीली दे दिया, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हैं. और 27 साल हम लोगों ने वेट किया है. और 2024 इलेक्शन में भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वी नीड फ्रेश सेंसस, डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस, ताकि कोई लीगल चैलेंज इसको नहीं हो. तो इसको फिर हम नेक्स्ट 5 years के बाद ही सोच सकते हैं, 24 इलेक्शन के बाद जब ये होगा. आज अगर हम विमेन्स वर्क देखते हैं, women form 50% of the population. 2/3 of the world's work is done by women. 2/3 of world's illiterate are women. अगर हम दुनिया की प्रॉपर्टी को करें तो 100 of that property belongs to women. और वर्ल्ड की 70% of the poor are women. आप किसी भी आदमी से अगर पूछिए what does your wife do? Oh, she does nothing. Then you say, who does the cooking? Oh, my wife does. Who does the cleaning? My wife does. But then you say she does nothing, or very proudly you say she's a teacher, she's a doctor, she's an engineer. Kyun? Because economists have told us that work is something for which you get paid. So if I come and teach in a university or a college, I get a salary, तो ये work है. लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, after all ये तो मेरी ड्यूटी है. अगर मैं किसी और के घर में जाके खाना बनाऊं, मेरे को सैलरी मिलेगी, तो ये वर्क है. लेकिन अपने घर में तो मेरे को खाना बनाना ही है, ये तो मेरी ड्यूटी है. और ज्यादातर वुमेन जो है इस नॉन मोनेटाइज एरिया में काम करते हैं. ये केवल एक सिंपल बात नहीं है, इसका पॉलिसी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. इफ यू रिमेम्बर द सेंसस बिफोर 2010, हर घर में वो जाके पूछते थे औरतों से कि आप क्या करते हैं. दे ऑल्सो इंटरनेट, ओ मैं कुछ नहीं करती हूँ. सो यू से नथिंग नथिंग नथिंग. एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है. एंड व्हेन वी कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, out of 85% of the women are sitting and doing nothing, and only 10 to 15% women are working. तो तब विमेन्स मूवमेंट से एक बहुत बड़ा डिमांड हुआ था. दे सेड यू चेंज योर क्वेश्चन है. और अगर आप याद रखेंगे तो अब विमेन से पूछा जाता है हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, तब वो बताती है मैं इतने घंटे कुकिंग करती हूँ, इतने घंटे क्लीनिंग करती हूँ, इतने घंटे मैं मैनेजमेंट करती हूँ. उसको फिर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मनी वैल्यू दे करके विमेन का कंट्रीब्यूशन मानते हैं. अगर बहुत सारे स्टडीज आए हैं अब्रॉड से कि इफ यू कैलकुलेट जितना काम औरतें फ्री में करती हैं विदाउट एनी पेमेंट, ये लव के नाम पे और वॉट एवर फैमिली के नाम पे, many of the men will not be able to afford those services. मैं आपसे जमीला एक आई डोंट नो इफ एनीवन इज हियर फ्रॉम केरला, वो केरला की एक प्रोस्टिट्यूट थी. उसने एक किताब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसकी किताब को पब्लिश किया था, एंड 5-6 साल पहले हुई थी, एंड शी क्रिएटेड एन अपरोर इन सोसाइटी. वो किताब में वो लिखती, देखो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है जो वो कहती है. वो कहती है कि यू कॉल अस प्रोस्टिट्यूट्स, बट I don't have to wash any man's clothes without any payment. I don't have to provide sex without any payment. She says, whatever work I do, I'm an independent woman. I get money for that.
एंड आई थिंक इट इज विद डिग्निटी दैट आई एम लिविंग। लेकिन हमने उनको सब प्रोस्टिट्यूट्स बोल के रखा है। ज्यादातर आप वुमेन को देखो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 90%, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है 96%। और ज्यादातर यहाँ वुमेन इनविजिबल है। मेरी अभी रिसेंटली किताब 2023 में रुटलेट से आई थी, वुमेन्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो बीडी वर्कर्स का काम है। तो यू कैन सी द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विच इज देयर। हेल्थ की भी जब हम बात करते हैं, सोसाइटी के क्या एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स women, this is called the 10-90 gap. Women suffer from 90% of diseases and only 10% is spent on them. मैं थोड़ा, I'm 10 minutes, मैं आधा घंटा थोड़ा डिस्कशन चाहूंगी। तो कोविड जब आया है, हमको सबको मालूम है कि कैसे ये बड़ा, इंडिया में हमने 3 स्टेजेस देखे, इन सब में कितना नुकसान हुआ है। हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखा, और उस समय जो सारी लैंग्वेज यूज कर रहे थे हमारे लीडर्स, वो बहुत जेंडर्ड थी। हम बात करते थे वॉर, इट्स अ बैटल, पूरा मैस्कुलिन वर्ल्ड की बात करते थे, रिवेंज, ब्रेवरी, वायलेंस, डिसीजन मेकिंग। जब हेड ऑफ द स्टेट अपने को हेड ऑफ द फैमिली सोचता था, स्टेट का, नेशन को एक फैमिली मानता था, तो हम वैसे फैमिली की कल्पना नहीं कर रहे थे कि जहाँ पे वार्म केयर हो, बट जहाँ पे एक पेट्रियार्कल फैमिली है विच इज इन मेल हैंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने महाभारत रामायण से इस समय दिए हैं। लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे थे। पहली बार जब आदमी लोग घर में रहे तो उनको पता चला कि विमेन जो रहते हैं अंदर, व्हाट दे गो थ्रू। women have always seen the Lakshman Rekha, but men have not. लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ वो लॉस ऑफ जॉब्स हुआ। अगर आदमी औरत में से दोनों में से एक को देना था, तो women had to leave their job. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो they lost their jobs everywhere. हर कोई चीज बंद हो गई थी, स्कूल्स बंद थे, हाउस होल्ड एलिनेशंस थे, नर्सरीज, कॉलेजेस। और सबसे ज्यादा जो औरतों पे असर पड़ा, उसका वर्कलोड इंक्रीज हो गया। अगर आज भी आप देखें, पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बताया है कि दुनिया में अनपेड वर्क सबसे ज्यादा विमेन करती हैं। इंडिया में 6 घंटे एवरी डे विमेन अनपेड वर्क करती हैं, और इसके कॉन्ट्रास्ट में आदमी लोग केवल 1 आवर अनपेड वर्क करते हैं। तो ये यूनेस्को ने उस समय बताया कि चाइल्ड केयर वॉज अ मेजर इशू, क्योंकि जब बच्चों को हम ना क्रैश में छोड़ सकते थे, ना मेड्स घर में नहीं आ रही थी, तो केवल घर पे जब बच्चे रहने लगे तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन पे पड़ गई। ओल्ड लोगों को भी देखना विमेन पे, क्योंकि केयर जो है वो केवल विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल्स पे भी बहुत असर हुआ। 32 करोड़ स्टूडेंट्स वेर हिट बाय कोविड, एंड स्कूल्स कॉलेजेस शट हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। ये आप मैप देखिए 2022 का, which showed that कोविड टाइम में जो ये डार्क आपको पिंक एरिया दिख रहे, ये टोटली स्कूल्स क्लोज थे। येलो में थोड़े थोड़े लिमिटेशन से थे। तो यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कूल्स वेयर, कॉलेजेस वेयर क्लोज। बट सबसे ज्यादा जो कोरोना का इम्पैक्ट हुआ, विद इंक्रीजिंग चाइल्ड केयर, डबल बर्डन ऑफ वर्क, लॉस ऑफ पे, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया। The slogan in COVID was stay home and stay safe. But unfortunately, home is not a safe place for many women. बहुत सारी women are trapped into a very violent relationship with the men, with the family. And इस समय, जब आदमियों को इतना uncertain future था, loss of job था, liquor was not available, तो ये, it increased family violence. National Commission of Women ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया उस समय कि आप, ठीक है, आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। एक महीने में दे गॉट मोर देन 40 केसेस, कंप्लेंट्स व्हिच वर देयर। तो ये आज जब हम बात करते हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमको आदमियों की भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मेन प्ले अ मेजर रोल। आज जब तक हम मेन को नहीं, केवल औरतों को एड्रेस करने से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। Men have always lived gendered life. आप फैमिली में रहते हैं, आपकी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, खुद आपकी बेटियां हैं। तो अगर हम आदमियों को यहाँ से निकाल देते हैं, जेंडर में टॉक्स में उनको नहीं इंक्लूड करते हैं, तो और जेंडर इनइक्वालिटीज
बढ़ जाएंगी. And we have to really involve more and more men, because they have always interacted with women on household and public places also. So what we need is a shift in approach, to women's welfare, advancement, to empowerment. And only then, we can, when we include more and more women in policies, then the change will happen. बहुत बार मेरे क्लास में बहुत डिस्कशंस होती हैं, तो स्टूडेंट्स जब हम डाउरी की बात करते हैं तो कहते हैं मैम आई डोंट बिलीव इन डाउरी, मैं तो नहीं डाउरी लूंगा, बट इफ माय पेरेंट्स टेक व्हाट कैन आई डू? Then they tell me, ma'am, let the girls think over it because it is their issue. I tell them, fine. It is their issue because you are getting married. But tomorrow when you get your daughter married, whose issue will it be? Will it be your issue or your wife's issue? तो इसलिए हमको जब विमेन्स, हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, वी हैव टू से दे आर ह्यूमन इश्यूज, दे आर इश्यूज ऑफ सोसाइटी. और इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम किसको ब्लेम करें जो प्रेजेंट सिचुएशन है? Do we blame men? Do we blame women? Or we blame both men and women? I think we are asking the wrong question. Rather than asking who is to be blamed, we should ask what is to be blamed. That will lead us to an analysis of patriarchy, capitalist mode of production relation. It will help us understand socioeconomic groups within caste, class, religion. We have to understand the socially governed norms of society. And gender sensitization is something which has to be really brought in. हम 4.5 साल से इस mindset से जी रहे हैं. It is very important to change the mindset, and unless we change the mindset, I do lot of coaching. यहाँ पे मारी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, जो IAS ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके फाउंडेशन कोर्स होते हैं, 10 साल से हम लोग कर रहे हैं. मसूरी में उनके होते हैं, फिर हैदराबाद में भी होते हैं. आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी स्मार्ट. उनको मालूम है कि हमको क्या बोलना है, पब्लिक फोरम में कैसे इंटरेक्ट करना है, व्हाट इज पॉलिटिकली व्हाट इज राइट टू स्पीक. लेकिन अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है. सो वी हैव टू रियली चेंज आवर माइंडसेट एंड decide that, re-socialize the changing context. We have to understand with empathy the gender roles, our whole perception, attitudes and behavior. And ये केवल mindset से ही नहीं होगा, सबको मिलके काम करना है. Family, society, educational institute, state, market, media, religion, culture, literature. और तभी हम, ये bias से deal कर पाएंगे. सबसे पहले हमको एडमिट करना है कि वी हैव दीज बायसेस. हमको ये बायसेस को समझना है. वी हैव टू देन करेक्ट दीज बायसेस, एक्सपोज आवरसेल्व्स टू दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. तो तभी हमारी जो, मैं कंक्लूड करूंगी कि जेंडर इक्वालिटी तभी रियलिटी होगी जब हम अपने सोसाइटी के वैल्यूज चेंज करेंगे. और हम कहाँ से शुरुआत करें? वी हैव टू स्टार्ट विद द इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल को एक प्लेज लेना है कि मैं प्राइवेट में और पब्लिक में मेरा बिहेवियर सेम होगा. वी हैव टू लर्न टू मेजर मैस्कुलिनिटी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी. सबसे पहले हम घर में शुरुआत कर सकते हैं. हम अपने बेटे को सिखा सकते हैं कि वो भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़े. घर का काम सबका काम है. बोथ ऑफ देम शुड बी इन्वॉल्व. एंड वी हैव टू टीच आवर डॉटर्स ऑल्सो टू बी असर्टिव, टू ब्रेक दैट साइलेंस. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. 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 We can have some Thank you, madam. question answers. Can we have some questions? Yes, ma'am. Sure, ma'am. How do I end this? Sorry. मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फीमेल्स जो है, 1 minute, क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? Yeah, tell me, please. यस मैम, कि फीमेल्स जो है उनको लॉ की तरफ बहुत सारा लॉ में प्रोविजंस है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, जो कि उनको पता नहीं है. और जिनको पता है तो यूज से ज्यादा वो मिसयूज हो रहा है. ये चीज है. जैसे डॉरी एक्ट जो है उसका यूज से ज्यादा मिसयूज होता है. लड़कियां मर जाती हैं लेकिन पेरेंट्स जो है इग्नोर कर देते हैं, और मिसयूज करने वाले बहुत हैं. तो उस लॉ को जो है ये होता है. उसके बाद लड़कियों का तो मेल्स जो है
साइंटिफिकली स्ट्रांग होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरॉन है। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और एंशिएंट टाइम में बिफोर सिविलाइजेशन भी मेल और फीमेल अलग रहते थे। फीमेल्स अलग ग्रुप में रहती थी, मेल्स अलग ग्रुप में रहते थे। उनका जो है कभी कभी इंट्रैक्शन होता था। और अभी जो है वाई क्रोमोसोम जो है वो मतलब कि समय के साथ वो श्रिंक करते जा रहा है। तो हम लोग साइंटिफिकली एक जोक करते हैं कि मेल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन फीमेल्स पे तो सर मैम कभी हर जगह वही है, वी आर वर्किंग, वी आर अर्निंग, पर काम तो हमें ही ज्यादा करना है। और जो दिखा भी रहे हैं कॉलेज में भी ये होता है कि मैम है तो उनको देखते फिजिकली देखते हैं, अरे मैम तो बड़ी सुंदर है, इस तरह का भी सेंस आता है। हम लोग तो नहीं देखने जा रहे आप कैसे दिखते हैं। नहीं, जो आप कह रही हैं वो बहुत सही है। यस, देयर इज सम मिसयूज आल्सो व्हिच इज हैपनिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट जब हम सोशल साइंटिस्ट की तरह बात करते हैं तो सोसाइटी में हम मैक्सिमम देखते हैं। जब मैं पुलिस एकेडमी में लेक्चर देखते हैं तो वो कहते हैं मैम आप जानती नहीं है आजकल लड़कियां ऐसी हो गई वैसी हो, दे गिव सो मेनी दिस थिंग तो यस दैट इज दे मे बी ज्यादातर तो देयर इज वायलेंस। तो जब हम एज ए सोशल साइंटिस्ट वी स्पीक ऑफ द मेजर वायलेंस। और मेन क्या है एक और चीज जो बहुत समझ में आती है कि ज्यादातर औरतें औरतों की दुश्मन होती है। हम कहते हैं सास बहू को बहुत सी द मदर-in-law does not see herself as a woman, she sees herself as a representative of that family. So then that is something which we have to नीरज राय जी अपने आप को आप म्यूट कर लें प्लीज। नीरज राय जी, there is some noise which is coming, so we have to really understand that मार्क्स ने क्या कहा था कि there is no bonding female to female, इसलिए you can never have a revolution. So this is something we have to really understand. Okay, so what you say is true, but then in spite of that, yes, there are a lot of issues in the society. Fine, yes. Who else? और मैम ये भी पूछना था मुझे कि देवदासी होती है तो देवदास क्यों नहीं होते? Yeah, that's a fact. और अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता की क्यों होती है? और इसमें भी मुसलमान में कहा गया कि जो लेडी रखेगी डंडा रखेगी पति को मारने के लिए और मार खाएगी वही सबसे पहले स्वर्ग जाएगी। डिवोर्स का राइट अगर मुस्लिम विमेन को मिला है तो पति जब तक 3 बार तलाक नहीं बोलेगा तलाक नहीं देगा। फिर इस्लाम में है कि 2 औरत की गवाही 1 आदमी के बराबर होगी। मतलब औरत को जो अक्ल है वो आदमी की आधी है। हाँ, तो मेन क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये सब लॉज बनाए गए थे ना। उसके बाद फिर औरत जो है वो बुर्का लगाएगी, आदमी क्यों नहीं लगाएगा? 4628.25। या आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए पहले, फिर क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट मैं शाहीन रजिया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। ओके, गुड। नेक्स्ट मैडम अमित कुमार। प्लीज। कहाँ से अमित कुमार जी? मैडम सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आपने बहुत ही जो बर्निंग इश्यूज हैं आज के समय में और गहन समस्या है उसको आपने सामने रखा, इसके लिए आपको बधाई। जैसे सिमोन दो बुआ ने कहा था औरतें पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। प्लीज रमेश राय, कैन यू म्यूट? शाहीन मैडम को भी धन्यवाद, इश्यूज सामने रखे। रमेश भाई, पता नहीं ये पुरुष मानसिकता के कारण बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। हाउ डू वी डील विद दिस? मुझे पता नहीं मैडम। म्यूट हिम। अजहर, आर यू देयर? कैन यू म्यूट? मीटिंग से टर्मिनेट कर दीजिए ना। नहीं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मैडम, ये शायद मैं पुरुष मानसिकता के कारण पूछ रहा हूं। I don't know whether I am conditioned or not. रमेश राय जी प्लीज। मैडम, ऐसा मुझे लगा कि चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे इश्यू डायरेक्टली एड्रेस होने चाहिए इंडिया इश्यूज पे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा कहीं ना कहीं बायसनेस आ गई आपके डेटा में।
आपने साउथ एशिया पर फोकस किया, लेकिन जहां तक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा रेप केस अफ्रीका में होते हैं। साउथ अफ्रीका टॉप पे है। इवन स्वीडन जैसे डेवलप्ड कंट्री में वो टॉप 10 में है। इवन अमेरिका, न्यूयॉर्क की रेप। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत डिस्टर्ब। अमित जी आपका सुनाई भी नहीं दे रहा मेरे को, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही। कैन समबडी म्यूट? रमेश जी को मीटिंग से बाहर करिए, बाहर करिए, इनको रिमूव कर दीजिए। नहीं, बहुत मेरे को ना सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऑनलाइन में ये दिक्कतें होती हैं, यू नो। इज नॉट रियलाइजिंग वो म्यूट में नहीं है। कोई ने पर्सनल कॉल कर दे, मना करे इसको। अजहर कहाँ है? अजहर, चलिए। या कैन यू हियर मी मैडम नाउ? Yeah, okay. You were giving statistics. Yeah, that is true. Africa and total sex ratio worldwide, 101 male and female 100. And in India now, in 2023, 1020 female over 1000 male. It is the current sex ratio of India. Slightly, yeah, it has improved, yes. Now we can talk about domestic violence. सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस स्त्रियों पर नहीं होता, पुरुषों पर भी होता है मैडम। मैं नहीं, या फाइन। अगेन मैडम, दूसरी बात, जो केसेस हैं, जो भी स्त्रियों को अधिकार मिले हैं, जो उनको मिला है, एक शील्ड मिला है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उसका मिसयूज आजकल बहुत ही देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा, हम कितना भी कानून क्यों ना बना ले, जैसे अम्बेडकर ने बोला था, कानून अच्छा बुरा नहीं होता है, चलाने वाले उसके अच्छे बुरे होते हैं, कि कौन उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ठीक है। अंतिम बात जो मैडम रखना चाहता हूं मैं, कि जब हम पैरामीटर की बात करते हैं जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में, तो हम पुरुष का ही पैरामीटर क्यों लेते हैं, जब हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, सारे पैरामीटर पैट्रियार्कल है, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो सोशल आइडियल की बात हो, उसमें सारे पैरामीटर पुरुषों के बनाए हुए हैं, वो मेड बाय मैन है। तो हम स्त्रियों के रूप में, मेरी मानसिकता है, हो सकता है मैं गलत हूं, एक स्त्री पुरुषों के बनाए हुए आइडियल पर क्यों जाना चाहती है, मतलब पुरुषों के जूते में अपना पैर क्यों रखना चाहती है। हम यहाँ क्यों नहीं बात करते हैं एक मानव के रूप में। हो सकता है कि हमारे में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग होने के कारण हमारी मेंटेलिटी अलग हो, हमारा वर्क नेचर अलग हो। एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी मैडम, की एंड का, जिसमें पुरुष नौकरी नहीं करना चाहता है, स्त्री नौकरी करना चाहती है, और पुरुष ही उसकी मतलब कि पूरा डोमेस्टिक हेल्प करता है, सब कुछ वही करता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे पालना, और स्त्री नौकरी करती है। तो ये विदिन 10 ईयर मूवी बनी थी की एंड का। तो सर मैडम इसको आप कैसे एड्रेस करेंगी, क्योंकि ये वन साइडेड मुझे लग रहा है। आप थोड़ा पुरुषों के हिसाब से सोचिए, उसके बाद एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव रखिए कि ना पुरुष ना स्त्री। आजकल तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, हम ये ऑपरेशन से अपना जेंडर भी चेंज करवा सकते हैं। ये मूल रूप से एक मानसिकता है, बायोलॉजिकल उतना रहा नहीं। फिर ट्रांसजेंडर की स्थिति आ गई है, उनको भी स्पेस चाहिए। या अमित जी, जो आप बात कर रहे हैं वो सही है। यस, डोमेस्टिक वायलेंस इवन मेन सफर। लेकिन जैसा मैंने शाहीन को रिप्लाई दिया था, एज अ सोशल साइंटिस्ट जब हम कुछ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, हम जहां मैक्सिमम क्या हम सोसाइटी को एज अ होल लेते हैं ना, अगर हम इंडिविजुअल केसेस को लेने लगे देन वी आर साइकोलॉजिस्ट, वी आर नॉट सोशल साइंटिस्ट। तो जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो मेन वर्सेस वुमेन ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो उसको हम बात आगे रखते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज देयर। आपकी जो दूसरी बात है कि हम ह्यूमन को लेकर के हम किसके अगेंस्ट कंपेयर करेंगे सोसाइटी में, तो वही पैरामीटर तो मेल वर्सेस फीमेल ही रहेगा ना। वी हैव टू कंपेयर। आप किसके अगेंस्ट, ट्रांसजेंडर बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो एक हमको अभी जो एग्जिस्टिंग है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वी हैव टू डिफाइन इट, एंड वी ऑल्सो हैव टू, जैसे मैंने एंड में कहा, हमको एक एनालिसिस पेट्रियार्कल सोसाइटी की करनी पड़ेगी, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की करनी पड़ेगी, रिलीजन की, और सबको मिलके करना पड़ेगा।
तो ये बहुत जरूरी है कि पैरामीटर तो आपको मेल ही होगा ना, वी हैव टू लुक एट मेल। रिलीजन है, रिलीजन तो अपने आप में पैट्रियार्कल है, उसमें हाँ, कोई भी ऊपर नहीं पहुंच सकता, कोई फीमेल, चाहे हाँ, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, कोई शंकराचार्य स्त्री नहीं बन सकती है, कोई पोप स्त्री नहीं बन सकती है, कोई हाँ, खलीफा तो स्त्री ये नहीं क्या बन है, सकती किस है। सोसाइटी में बना है? अगर आप हिस्ट्री पढ़िए, मैं हिस्टोरियन हूँ, मेरा बेसिक डिसिप्लिन हिस्ट्री है। शुरू में जब सिविलाइजेशन आया था, मदर गॉडेसेस सब जगह वर्शिप हो रही है, बहुत माता सारी देव भगवान, यू सी, दे डिडंट अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुएशन, रेड ऑकर कलर से वो लोग पेंटिंग्स बनाते थे। बट जैसे जैसे, क्योंकि दे डिडंट अंडरस्टैंड, सी मैटर्निटी इज समथिंग व्हिच यू कैन सी। पैटर्निटी आप कैसे प्रूव करेंगे कि फादर कौन है? तो गर्डा लर्नर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की, और वो बताती हैं कि जब ये सारे आर्किक सिविलाइजेशन जब आया, जब ये इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, ऑल दी सिविलाइजेशन केम, तो ये एक ऐसे सिविलाइजेशन थे जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई। They had to preserve the private property and to see to it that the property only goes to your son. तो उसका क्या हुआ, आपने औरतों को कंट्रोल में करना शुरू करा। मार्क्स और एंगल्स ने भी यही बात की है। He says the day private property emerges, it was the mother's एग्रीकल्चर सोसाइटी से मैडम स्टार्ट हुआ ये, हाँ, so in हंटर that सोसाइटी way में you नहीं have था। to control. You have to really control it in that sense. So that is something which is very important. Okay, so we have to really, look at it, when this control started, how it started, and what impact it had on society. Fine. Any other? Yeah. मैम मुझे ये कहना था कि मेल्स के इंट्रोड्यूस पास करिए जो अपने है, को, इंट्रोड्यूस करिए। अच्छा, आप तो ओके। शाहीन मैम, हाँ। मुझे ये कहना था कि मेल्स के पास जो है सबसे बड़ा उनका वेपन है टेस्टोस्टेरोन, जो आफ्टर प्यूबर्टी उनको बहुत स्ट्रांग बनाता है, फिजिकल, मस्कुलर, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, और डोमिनेटिंग नेचर देता है। तो यही पर से जो है नेचर जो है मेल्स और फीमेल्स को अलग करता है। फीमेल जो है बहुत वर्सेटाइल है, और मेल्स जो है लगभग उनका मोनोटोनस चलता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो मस्कुलर जो है वो ज्यादा पावरफुल है। और मारना है, अगर वाइफ सोचेगी कि हम पति को पटक के मार दे, सकेगी नहीं, तो फिर वो सरेंडर कर जाएगी। परेशानी तो यहीं पे होती है कि वो लोग अगर रेप्स होते हैं तो कोई औरत है अपने आप को क्यों नहीं बचा रही है, क्योंकि वो वीक है। तो सिविलाइज सोसाइटी में कि कोई अगर फिजिकली कम है तो उस पर जुल्म करना क्या सही बात है? नेचर ने आपको ताकत दिया है, तो आप एटम बम बना लिए तो क्या सब पे गिरा दीजिएगा? Yeah, fine. Again, I think Dr. Pooja Rai has a question. Yeah. हमें लगता है साइन मैम हमें लगता है वीक नहीं है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है वो जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू से ही इस तरह की होती है। ये बच्चे के लिए ये खिलौना है, बच्चे के लिए ये खिलौना है, हम शुरू से कहीं ना कहीं इम्पोज करते हैं, वो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की वजह से वीक होती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि वो फर्क पड़ता है। लड़कियां भी पटक के मार सकती हैं, पत्नी भी पटक के बहुत मारती है। नहीं सर, हम लोग जानते हैं ना कि क्या पावर होती है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में, बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, वो तो है, नेचर का है, वो फर्क तो रहेगा। वो तो पूजा रहेगा। We just have 15 minutes. Ma'am, this is Ramesh, ma'am. I have some query also. एक्चुअली मैम मुझे ये कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस बाहर नहीं आ पाते। जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाहर निकल नहीं पाते। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को पब्लिक स्फीयर में लाया जाए, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, नहीं, इसलिए नहीं बाहर आते, मैंने कहा ना कि क्योंकि हमने मैस्कुलिनिटी को विमेन के एक्सपेंस पे डिफाइन किया है। विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमको घर की इज्जत रखनी है बच्चों के लिए। तो ये पूरा जो एक हमारी आइडियोलॉजी है ना, जब तक हम इस आइडियोलॉजी से डील नहीं करेंगे बहुत मुश्किल होगा। अब ठीक है, थोड़ा फिर भी इफ यू सी देयर आर मोर केसेस व्हिच आर बीइंग रिपोर्टेड, बट आइडियोलॉजी तो शुरू से हमारी यही है ना कि विमेन इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, शी इज द इज्जत चली जाएगी। देखो, रेप जब किया गया है तो वो लड़की की कैसे इज्जत जाएगी, ये हमारा माइंडसेट है ना। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द बॉय हु हैज डन इट, ये जब तक माइंडसेट हम चेंज नहीं करेंगे, we really cannot do anything. So that is something which is very important. और ये आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें रोल है।
क्यों उसको यस छुपाते मैम, हैं? मैं भी यही कह रहा था मैम, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो शुरू से कर दी जाती है, एग्जैक्टली, वो बड़ा मायने रखती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। डेफिनेटली। ओके, पूजा पूजा राय। जी, थैंक यू मैम। जैसा शाहीन मैम ने भी कहा कि वो एक नेचर ने ही स्टार्टिंग से ही अलग बनाया ही है, तो अभी हम वो तो जो है वो है। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करना चाहते हैं कि मैन वर्सेस वुमेन ना करके, कि अगर हम देखें तो बचपन से ही, अगर जो व्यवहारिक बातें हैं, आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, कि बचपन से ही आप देखेंगे या वर्क प्लेस पे कहीं भी जो महिलाओं का एक मानसिक उत्पीड़न है, आप देखेंगे ज्यादातर वो महिलाओं के द्वारा ही होता है। जो मैरिड वुमेन है वो भी देखेंगे, या फैमिली में भी बचपन से जो सोशलाइजेशन स्टार्टिंग से होता है, समाजीकरण, वहीं से हम सिखाते हैं कि आपको घर का काम करना है, ये करना है। मतलब ये पूरे सोसाइटी की बात हो रही है, ये मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हमें बचपन से उस तरीके से ज्यादातर हम फीमेल्स के द्वारा ही बनाया जाता है। वर्किंग प्लेस पे भी आप जहां हम काम करते हैं वहां भी आप देखेंगे कि पुरुष कुछ बोल रहे हैं, उससे ज्यादा महिलाएं ज्यादा टिप्पणी करती हैं कैरेक्टर के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। तो हमें हर चीज में सीधे हमारी लड़ाई पुरुष से ना होके हम पहले ये सोचे कि हम कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी किसी साथी कर्मचारी की, या अपने घर में जो महिलाएं हैं उनकी। क्योंकि जो भी वैवाहिक जीवन में भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो महिलाएं पीड़ित हैं वो सास के द्वारा, इनके द्वारा, या सास बहू के द्वारा। मतलब यहाँ सास बस नहीं है, बहू भी जो पीड़ित है या जब सास भी पीड़ित है, तो वो महिलाओं के द्वारा ज्यादा हो रहे हैं। तो हम सिर्फ पुरुष की ना बात करके थोड़ा इस पे भी हम कर सकते हैं कि खुद के प्रति कितने जागरूक हैं, कि हम एटलीस्ट रेस्पेक्ट करें, उसके बाद पुरुषों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है या जो भी चीज है। नहीं पूजा, जैसे मैंने बताया, वो घर में जो सास है वो अपने को एक औरत नहीं देखती है ना, वो एक पेट्रियार्कल फैमिली की अपने पार्ट। जब तक ये आइडियोलॉजी हम चेंज नहीं करेंगे, इट विल नॉट चेंज। जी मैम, चेंज तो फिर यही से होगा कि चेंज तो सबसे पहले वही लाना होगा कि हम उस तरीके से खुद को ना देखें। चेंज तो हम ही कर सकते हैं कि हम स्टार्टिंग से सोशलाइजेशन ही उस अकॉर्डिंग करें, हम अपने लेवल पे रिस्पेक्ट करें, कम से कम अपने घर में बढ़ावा दे लड़कियों को और लड़कों को उस तरीके से शिक्षा दें कि वो रिस्पेक्ट करें फीमेल्स की, अपने वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट करें। तो चेंजेस तो हम ही ला सकते हैं, बड़ी बड़ी चेंज थे तो। जी एनीवन एल्स? Madam, one sec. Can I ask something? Yeah. I need your PPT. Definitely, I can. I will share it with Azhar. He will send it to you all. Okay. If you can, you can share it here, because here I don't know how to share because there are so many members. I'll send it to Azhar. Just give me 1 or 2 days. I see when we speak, I'll little finalize it and I'll pass it on to him. आपका कोर्स कब तक चल रहा है? 11 पहले मैं आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आई विल शेयर विद यू। और एक और, मैं, आप लोग सब टीचर्स हैं, यू आर फेमिलियर विद एकेडमिक एडू? यस मैडम। उसमें भी आप रेखा पांडे आप डालिए गूगल में, you will find most of the article, most of the material is there, you know, because I believe in free sourcing, unless it is a copyright issue, you know, Cambridge University Press, Oxford University Press allow नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सारा मटेरियल मैंने वहां पे डाला है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डेफिनेटली भेजूंगी। ओके, या यस, एनीवन एल्स? या रोहित, थैंक यू मैम। इंट्रोड्यूस करिए अपने को। यस मैम, मेरा नाम रोहित है, रोहित कुमार झा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में, यूएनपीजी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ मैम। मेरा पहला कहाँ पे है कॉलेज? मैम ये ईस्ट यूपी में है, ईस्टर्न यूपी, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कुशीनगर इलाहाबाद के पास है, मैं इलाहाबाद से पढ़ी हूँ। इलाहाबाद से थोड़ा 4 घंटा दूर मैम, गोरखपुर के पास है मैडम। गोरखपुर के पास। गुड गुड, हाँ बताइए मैम। क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ, हमारे कॉलेज में जेंडर इक्वालिटी पे सेमिनार हुआ था, आई थिंक वुमेन्स डे पे हुआ था, and not a single woman showed up to speak, so I had to speak. और उस समय I found out something very interesting, कि पहले कहा जाता था कि लड़कियां साइंस में कम है क्योंकि उन्हें साइंस पढ़ाया नहीं जाता था, फिर पढ़ाया जाने लग गया तो उन्हें एंकरेज नहीं किया जाता था, फिर एंकरेज करने दिया गया तो हमें इंसेंटिवाइज नहीं किया गया, एंड सो, और उसके बाद इंसेंटिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन माइंडसेट नहीं बदला है। तो फाइनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मैम कि जो जहाँ पे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है, अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहां पे लड़कियों का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेम सब्जेक्ट्स में एज अ टोटल फ्रैक्शन वो कम क्यों है, और ईरान और अल्जीरिया वगैरह में ज्यादा क्यों है, 40%
45% है ईरान में, और अमेरिका, स्वीडन, डेनमार्क, सो कॉल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वाले कंट्री में 10-12% के आसपास है। ऐसा कैसे बैकफायर हो गया? नहीं नहीं रोहित, मैं एक चीज बताऊंगी। डेफिनेटली यू नो, वन, मैं नहीं मानती हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज में जेंडर इक्वालिटी है, एक्सेप्ट नॉर्वे। वहां पे भी देखो, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, आई हैव टॉट इन मेनी 4-5 यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। तो ये केवल हमारा, हमको लगता है कि वहां पे जेंडर इक्वालिटी, वहां भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ओवर देयर आल्सो। लेकिन जो दूसरा आपने जो सवाल पूछा है, यस, ज्यादा औरतें यहाँ, लड़कियां स्टेम में है, वो है। लेकिन अगर आप देखे कितने वाइस चांसलर्स वुमेन है कंट्री में, कितने हेड्स, डीन्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी जब कॉन्वोकेशन होता था, सारे ही टॉपर्स हमको लड़कियां ही दिखती थी, बट फिर वो कहाँ गायब हो जाती हैं? दे आर वेरी फ्यू रिप्रेजेंटेड एट हायर पोजीशन। मैंने आईटी पे कुछ काम किया है, जेंडर एंड आईटी पे। टॉप लेवल पर, मैनेजरियल लेवल पे कितनी वुमेन है? दे आर मोस्टली एट द कॉल सेंटर, यू नो, ऑपरेशन लेवल एक्सेट्रा। एक चीज जो आप फॉरेन कंट्रीज का बता रहे हैं, वहां पे एक तो ये डिफरेंस नहीं है। सी, जब मैं पढ़ाती हूँ ना, हमारी कंट्री में यही है कि हमने साइंस को बहुत ऊंचा रखा है, आर्ट्स को उसके नीचे रखा है। ये एक थोड़ा हमारा माइंडसेट है। बहुत पहले यू नो, नीदरलैंड में रेडमोंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थियोडर वैंडियर हैं, ही वाज हेड ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। उनके साथ मेरी 2-3 किताबें भी आई हैं। तो उन्होंने मेरे को मेल भेजा बीच में कि मैं 20 स्टूडेंट्स को लेके आ रहा हूँ, ये लोग बहुत जेंडर क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं, प्योर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। So can you call your computer science people also to sit in that workshop? तो then you know, प्रोफेसर अग्रवाल जो हेड थे वहां पे कंप्यूटर साइंस के, ही इज अ गुड फ्रेंड। तो मैं हंस रही थी, मैं कहती आपके लड़के आएंगे, बैठेंगे हमारे जेंडर स्टडीज के साथ, तो ही वाज लाफिंग। तो उन्होंने अलग वर्कशॉप की। देन आई एक्सप्लेन टू हिम कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आई मीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ब्रेक कर रहे हैं, एक 10 तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम 11 से डिवाइड हो जाते हैं कि ये साइंस है, ये आर्ट्स है। गुड स्टूडेंट्स गो टू साइंस, लेफ्ट ओवर कम्स टू आर्ट। ये जो एक माइंडसेट है। अब जो हमारे, जैसे अब हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है यूनिवर्सिटी में, मैंने ट्रिपल आईटी में भी 4-5 साल पढ़ाया है कोर्सेस, तो उनके जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 आर्ट्स के कोर्सेस करना जरूरी है। हमारे भी साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स करते हैं, बट ज्यादातर कंट्री में ये चेंजेस नहीं हुए हैं। वी हैव दैट डिविजन। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, वी गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू साइंस एंड थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन यूएस और ये सब, आई हैव सीन इन दीज कंट्रीज, दे डोंट वैल्यू साइंस। यू गो विद योर इंटरेस्ट। एक तो हमारी तरह भेड़ चाल नहीं है कि जहां आपको सीट मिली आपको जाना, इतना हमारा कॉम्पिटिशन है ना। देयर स्टूडेंट इज सिटिंग इन अ क्लास बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। मैं 19 में आई हैड अ फेलोशिप, मैं लंदन में पढ़ा रही थी, लंदन यूनिवर्सिटी में। मेरे क्लास में एक 65 और 70 ईयर के बैठे थे। अब ये तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती कि इंडिया के मेरे क्लासरूम में 23-24 साल के लड़के रहते मेरे एमए में। तो देन जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो कहते कि मेरे से कहते कि यू नो रेखा, हम इतना बिजी थे अपने लाइफ में विद चिल्ड्रन, वर्किंग एंड ऑल, बट आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। तो कहती है अब मैं रिटायर हो गई हूँ, नाउ आई रियली गॉट एन इंटरेस्ट, सो आई टुक एडमिशन। और वो आदमी ने भी यही बात की। हमारे कंट्री में ये बहुत रेयर होता है कि इंटरेस्ट की वजह से हम किसी में एडमिशन लेते हैं। यू नो, इट इज अ मैटर ऑफ चांस। आपको जहां एडमिशन मिल गया, जहां अवेलेबल है, यू टेक इट। तो ये इस वजह से वहां पे आपको ज्यादा दिखते हैं, नॉट बिकॉज दे गिव इम्पोर्टेंस टू यू नो साइंस और आर्ट्स लाइक दैट। अभी ये जो ईस्टर्न रीजन्स है हमारे, वी स्टिल गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू साइंस। ठीक है, दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। यस मैम, एक और सवाल था मेरा। हाँ, और ये थोड़ा स्टूपिड सा सवाल है, सो प्लीज डोंट माइंड। नहीं नहीं, नथिंग इज स्टूपिड। और मैंने सिंपली बोलूंगा कि अगर ये जेंडर इक्वालिटी का जो परसूट है, बहुत सारे सरकार पूरे दुनिया में, गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर परसुइंग जेंडर इक्वालिटी, अलग अलग चीजें कर रही हैं उसके लिए। और व्हाट आर द चांसेस इन योर एस्टिमेशन कि ये कंप्लीटली बैकफायर हो जाए, इन द सेंस कि लड़कियां और ज्यादा क्राइम कमिट करने लग जाए आदमियों की तरह, और मर्डर करने लग जाए, स्कैम करने लग जाए? नहीं, ये तो मैं नहीं बिलीव करती हूँ। प्रिजन्स की आप देखिए, आप जेल्स में देखिए, बहुत रेयर, आई मीन कंपेयर टू मेन प्रिजनर्स यू हैव लेस। यू नो, गांधी जी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे बाय नेचर विमेन आर नॉन वायलेंट, तो मैं वो लेके मान के उसमें चलूंगी। बट यस, यू नो, क्यों जेंडर की बात पूरी दुनिया में हो रही है?
जैसे मैंने बताया उसकी इम्प्लीकेशंस दिख रही हैं, जैसे मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस बताया, सोशल कॉस्ट बताया, पॉलिटिकल कॉस्ट बताया, और अब ये मान के चल रही हैं सारी वर्ल्ड की सोसाइटीज, अनलेस बोथ आर एट एन इक्वल लेवल, ये सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। उसको ध्यान में रख के ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। देखो तालिबान रेजिम में क्या हुआ था, जब औरतों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, हाउ डिड दैट सोसाइटी मूव फॉरवर्ड? तो ये सारे इश्यूज जब वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग। कोविड के बाद भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि विमेन पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो वी हैव टू रियली ब्रेक। बहुत सारी लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर दी बहुत सारे कंट्रीज में, इस दौरान काफी चाइल्ड मैरिजेस इंक्रीज हो गई थी। So because of all that fallout, now they are focusing on that. But certainly, I don't think there'll be a backfire. I don't believe. I mean, I would be positive on that. I hope backfire now. I don't ma'am, Quality, all the इससे they imitate all the good qualities of men and none of the let's see. That's मैडम yes. Anyone else? ये मैं डॉक्टर जुबैर आलम, सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी से मैडम। हाँ। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था, मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ाता हूँ अपने कॉलेज में। लिटरेचर के रेफरेंस से मैडम कई बार आता है, खास तौर पे मैं आपको एक तवज्जो दिलाना चाहूंगा डिक्शन के हवाले से, जैसे मेल और फीमेल शायरों का या पोएट का कह लीजिए, जो लैंग्वेज यूज हो रही है। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, एक मेल पोएट का, और वो भी प्रोग्रेसिव पोएट गुजरे हैं। वो एक जगह लिखते हैं मैडम कि तू है मगरूर तो अपना भी यही तौर सही, तू है मगरूर तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और नहीं, वो तो लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मैडम एक मिनट, सोसाइटी। और इसी के मैं अपोजिट में एक लेडी शायरा है, उनका मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। कहती है कि ये सच तो ये है कि उसने छोड़ दिया मुझको, सच तो ये है कि उसने छोड़ दिया मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये मैडम रुसवाई का जो एक कंटेंट मतलब आ रहा है कि भाई मैं तो क्या कहते हैं डिफेंस में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो क्या मैडम ये कहाँ से, इसका भी सोर्स वही है कि पैट्रियार्की से आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो हम ट्रेंड हो रहे हैं कि हम ऐसी ही लैंग्वेज यूज करेंगे? मर्द तो ये कह सकता है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो ये कंटिन्यूटी जो चल रही है, इसको मैडम किस रेफरेंस में, इसी में ही देखा जाए या कि कहीं इसका सोर्स कहीं और कुछ है? नहीं, डेफिनेटली देखो, लिटरेचर तो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी ना, जो सोसाइटी की आइडियोलॉजी है, वैल्यूज है। तो मैं तो कहता हूँ मैडम नहीं, आप उर्दू के हैं, आप क्लास को बताइए, आपने रुकैया सखावत हुसैन की सुल्ताना's ड्रीम पढ़ी है? नहीं, वो बिल्कुल उसके बारे में, दैट इज सो प्रोग्रेसिव। उस समय वो एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करती है जहाँ पे आदमी पुरके में है, पर्दे में है, और औरतें बाहर है। एक लेवल पे बहुत हंसी आती है आपको, बट इट ऑल्सो शोज यू द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, व्हाट वुमेन गो थ्रू। एग्जैक्टली मैडम मूवमेंट पढ़ाते हुए मैं सारा शगुफ्ता, फहमीदा, रियाज और इस परवीन शाकिर, इन सारे लोगों को जिनके वहाँ एक है, कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन कह सकते हैं, बगावत है, ये सारी चीजें आती है। बट ये कि मैडम इतने अरसे के बाद भी कोई डिक्शन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यस, अब मैंने जैसे बताया ना, 4,500 साल पुरानी आइडियोलॉजी इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं ना। मैम फीमेल को भी करना चाहिए, कोई और नहीं तो कोई और सही। मैडम मेरा नाम निखिल आनंद गिरी है। बेसिकली ये बट निखिल जी बोलिए। हाँ, मैं पटना के मौलाना मजहरुल्लाह की यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ, और आपका लेक्चर सुन रहा था, काफी रेडिकल और काफी चीजें मतलब बात हुई। एक सवाल, मतलब क्या सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्या? जैसे क्या ये हो सकता है कि मर्द जब शादी के बाद ससुराल जाना शुरू कर दें और सोसाइटी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाए, अपसाइड डाउन जैसा, इससे कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, देखो केरला में ये बहुत सारे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, उसको जरा बड़ा टॉन्टिंग तरीके से या उसको ह्यूमरस बनाने के लिए। केरला की सोसाइटी इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। वहां पे क्या है कि औरतें ही घर में रहती हैं, बट अगेन वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही बन गई है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पे काम किया है कि प्रॉब्लम पावर की है, जेंडर की ज्यादा नहीं, ब्रदर का डोमिनेशन है इंस्टेड ऑफ हस्बैंड एंड फादर। तो ये तो क्योंकि सोसाइटी, अगर मैं एज ए हिस्टोरियन बताऊं आपको, सोसाइटीज में कितने चेंज हुए। वी हैड एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन पेट्रियार्की तो चली आ रही है ना, इनफैक्ट इट गेट्स मोर एंड मोर स्ट्रेंथन। और जब हम 3 तलाक की बात करते हैं, जब हम शाहबानो केस की बात करते हैं, या हम देवराला में जो रूप कंवर ने सती किया था, सबसे पहले औरतें आगे आती हैं।
कि कि हमारा इट इज आवर ट्रेडिशन, वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहती है, क्योंकि वुमेन ऑल्सो इंटरनलाइज अ लॉट ऑफ दीज वैल्यूज। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स, मैं बार बार बताती हूँ, देखो जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बहुत आसान है रेवोल्यूशन। आपको क्या करना है, बसेस बंद कर देनी है, किसी की फैक्ट्री जला देनी है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब हालांकि गवर्नमेंट लॉज ला रही है कि जो राइटर होंगे उनकी प्रॉपर्टी से पैसा लिया जाएगा, लेकिन जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, आप किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? योर ओन हस्बैंड, योर ओन ब्रदर, योर ओन फादर, एंड यू आर ऑल्सो इन दोज रिलेशनशिप। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है सॉल्यूशंस बताना जेंडर के, इट विल कम आउट सो इजीली। मैडम, या आई नीड योर ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। एक्चुअली हम सोसाइटी में देखते हैं, अपने समाज में बहुत सारे जगह भी है कि गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज और बॉयज स्कूल और बॉयज कॉलेज अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप कितना मानती हैं कि यह जेंडर इक्वलिटी में एक बाधा है? दूसरी बात सर मैडम, कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, विवाह का, वो मूल रूप से धार्मिक संस्था द्वारा प्रोड्यूस एस्टेब्लिश्ड है, और हम जानते हैं मूल रूप से ये पैट्रियार्कल है, ये भी जानते हैं। जो सामान्य धारा में जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, मैरिज कॉन्सेप्ट, तो जेंडर इक्वलिटी में मैरिज का कॉन्सेप्ट वहीं से उत्तराधिकार की परंपरा आती है, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है, मैरिज से ही। तो मैरिज को हम बाधा माने क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी की प्रोडक्ट है, या इसको हम क्या माने? दूसरा हम देखते हैं, चूंकि आप हिस्टोरियन रही हैं, तो जो प्राचीन समय में जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे या कम्युनिटी, उनमें युवा गृह की अवधारणा थी। आज भी है कई जगह कि वहाँ बच्चे कम्युनिटी के होते हैं, किसी माँ बाप के नहीं होते, 5 साल के बाद युवा गृह में रहते हैं, स्त्री पुरुष मतलब बच्चे और बच्चियां दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई का थोड़ा वहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वहाँ जो यौन पे वर्जना है वो वहाँ नहीं है। तो एक फेयर सोसाइटी है, कई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ रेप नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्ट था ही नहीं, वो कभी किया ही नहीं गया था। खास कर नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं तो 1962 से पहले वहां था ही नहीं मेघालय में। तो ये कॉन्सेप्ट जरा आप क्लियर कर दीजिए, मैरिज और ये पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग जो संस्थाएं बनी है। नहीं, डेफिनेटली देखो, आइडियल तो इवन आई बिलीव इन को एजुकेशन। जब तक आप साथ नहीं रहेंगे तब तक you will not develop that respect for each other, understand। मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी जब मैं सिक्किम के कोई कॉलेजेस में गई, वहां मैंने सब लड़कियों को स्कूल्स में पैंट और शर्ट पहना, जो उन्होंने ड्रेस में भी एक पैरिटी है, जो ड्रेस लड़के पहनेंगे लड़कियां भी वही पहनेंगी। तो वो बड़े फ्रीली लड़कियां दौड़ भाग रही थी, कूद रही थी। तो यस, एक हमारी जो स्कूल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये इंसिस्ट किया गया है कि हमको स्कूल में एक तो कोएड एनकरेज करना है, और ड्रेस, एक यूनिफॉर्म ड्रेस लानी है लड़के लड़कियों के लिए, और एनकरेज करना है दोनों को। स्पोर्ट्स में लड़कियां जब स्कर्ट्स में पहनेंगी तो वो इतना फ्री नहीं हो पाएंगी स्पोर्ट्स में, स्पेशली इन अ कोएड स्कूल। यस। और सेकंड, जो आप मैरिज की बात कर रहे हैं, सी आई डोंट थिंक वी कैन, अभी तक तो हमारे सामने कुछ आया नहीं है, वी कैन रिप्लेस मैरिज बाय एनी अदर इंस्टीट्यूशन। मार्क्स ने जब बात की थी, उन्होंने ये किया था कि एक फैमिली में क्यों ऑपरेशन होता है। अगर आप सवेरे देखिए, एक हैदराबाद देखिए, लाखों करोड़ों घर है, सवेरे औरतें उठती हैं, वो खाना बना रही हैं, पैक कर रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, काम कर रही हैं, और ये एक ही घर में नहीं होता, ये लाखों करोड़ों घर में यही होता है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिटी किचन, कि अगर हम लेडीज को एक कम्युनिटी किचन हो, दे विल बी रिलीव फ्रॉम दिस, क्योंकि हर कोई वही काम कर रहा है, एंड देन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। आज से 10-12 साल पहले मैं ताइवान गई थी, आई वाज देयर फॉर 10-15 डेज। तो मैं इतनी हैरान थी कि वहां पे 9-9:30 बजे एक डब्बा आ जाता है, स्टेट सप्लाई, जिसमें सबको ब्रेकफास्ट टाइप हो जाता है, लंच भी एक और डब्बा आ जाता था 1-1:30 बजे। अब उन्होंने गिव अप कर दिया है, और औरतें जो है केवल शाम को जाके घर आती थी, तो वो कुछ सब्जी वब्जी ले आती थी, घर को क्लीन करके एक टाइम खाना बनता था। एंड आई सेड माय गॉड, व्हाट फ्रीडम इफ वी हैव टू कुक ओनली वंस। आप देखिए, त्योहार में तो क्या, इट्स ओनली फॉर बॉयज, आई टेल माय स्टूडेंट्स। औरतें तो और दिन आप अच्छी चीजें पका रही हो, उस दिन आपको आर्डर्स बनानी है, तो विमेन तो सारा इन्वॉल्व होती है। तो मैरिज आई डोंट थिंक इज बैड, बट द शेयरिंग ऑफ वर्क अगर इक्वल हो जाए,
modern हो जाए, that will solve the problem. I don't think doing live-in relationships, and do you think they have solved the problems? It do you think that marriage is solving the problem? Do you think that marriage is solving the problem? No, marriage is not. We have to It change creates problem, nature. Nature of them. It creates problem. See, you cannot. Marriage cannot solve the problem unless the two participants in the marriage get together and change the structure. How they are going to operate. Fine. मैडम यदि मैरिज का कोई भी कॉन्सेप्ट लीजिए, रिलीजियस मैरिज का, तो उसमें जो शपथ दिलाई जाती है, संकल्प दिलाया जाता है, वो ऑल का सभी पैट्रियार्कल है, चाहे किसी भी रिलीजन में हो। आपको भी पता है ये बात। हाँ, नहीं, that is true. That's why I'm asking. Time हो गया. Any other? I think we'll conclude. Ma'am, I have a question. Yeah. So this is Vineet Pande, Government Naveen College, Janakpur, Chhattisgarh. So ma'am, you talked about women doing unpaid work. So I largely agree with you. I have a question. There are men also who are doing unpaid work, and this is not. I'm not talking about any personal men. I think every man is doing some unpaid work. So I have a question. Isn't this both getting cancelled out? No, but see, compare. When we talk of as a social scientist, the amount of work, calculations where women do 6 hours of unpaid work, men do only 1 hour. Men are also doing, but calculation अगर हम society की देखते हैं, women का ज़्यादा है. That is the only point I'm making. Ma'am, I just have a comment. My name is Ujaswita and I'm from CGMG College, Purulia. I think gender equality, if you really want to talk about gender equality, the best example is right now, while we are doing FIP, while we are doing this FIP course, we see a lot of our mothers, sisters cooking for us. And right now, I know it's a very it's a very simple example, but when Nikhil sir was making a comment, a lady or a ma'am was sweeping the floor while he was making good comments on gender, and he was raising issues on it. So that is why also we require gender equality, because we see that a lot of women have been subjected to a certain kind of work, and men are not helping out in those matters. So I think gender equality but then ma'am, you are providing this financial help to your family. No, that now women are also providing. As a son, women are also providing the financial help to the family. Yes, ma'am, they are providing. So in those homes where women are providing financial help, I don't see they are doing unpaid work. And if they are doing, so men are. See, as a son, we are doing more work. See, the fact that you said about paid and then we are doing job, research work, everything. The fact that you have another class, men work, that keep another day for discussion. मुझे लगता है मैडम, जो पेड की अवधारणा है ना, वो पेड की अवधारणा, सैलरी की जो अवधारणा है, कैपिटलिस्ट अप्रोच है. हमें इसको दूसरे ढंग से सोचना होगा. कैपिटलिज्म का उत्पाद है ये जो पेड है, सैलरी है, कि व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर सो मेनी वर्क्स. सो यदि कैपिटलिज्म को हटा दे, तब हम देखेंगे एक नई दृष्टि से, तब मुझे लगता है बेहतर आइडिया. Because women's work are always considered as work of love, labor of love, so it is never taken into consideration. Yeah. Fine. That is the problem. I think we'll have a discussion some other class. I'll tell him to organize. Yes, madam. You are welcome. Okay. We will wait. Eagerly wait. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. मैडम पीपीटी सेंड कर दीजिएगा. आवाज आ रही है. शाहीन मैडम, आपने जो बोला, मुझे एक्चुअली उतना बायोलॉजिकली पता नहीं है कि पुरुष स्त्री में कितना अंतर है. यदि आपके पास कोई वर्क हो तो कृपया ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, पर्सनल सेंड कर सकती हैं. एस्ट्रोजन और वो आपने हार्मोन पे बताया था डिवाइड, कि हाउ दे डिफरेंट एंड हाउ, मतलब कि उनका कैसे कैरेक्टर उससे अलग अलग डिफरेंट हो जाता है. यदि आपके पास ऐसा कुछ हो. वर्क नहीं है ये, मतलब ये स्टडी है, टॉपिक्स है, हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट को. यदि आपके मेरा पास कुछ कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है, ये बहुत दिन से ये चला आ रहा है.
कोई लिंक आपने शेयर कहा कर ना देगा। अनपेड वर्क, तो हस्बैंड्स को ऐसा करना चाहिए ना, आधा अपना सैलरी वाइफ को दे देना चाहिए चुपचाप से, अरे विदाउट मैडम मैं एनी। बोलता हूँ शादी ही नहीं करनी जी चाहिए, बातें बिल्कुल, खत्म। आई एग्री विद यू मैम, बट जनरली अगर आप देखेंगे आई सी हस्बैंड एंड वाइफ एज अ एंटिटी, लाइक दे आर वन। या मैं अगर अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इफ देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस दे आर डिफरेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन अगर व्हेन दे आर एज वन, दे आर लाइक किड्स। अगर देखें आप बच्चों को मैम, दे सी देयर पेरेंट्स एज वन। तो अभी वहां पे क्या होता है मैम, जो भी पैसा हो अगर आप उसको 50-50 डिवाइड कर देंगे, देन आई सी देयर इज ए लाइक क्लियर मैथमेटिक्स इन देयर रिलेशनशिप, और वो मेरे हिसाब से मतलब पता नहीं, मतलब एटलीस्ट आई डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी। तो लेकिन मैं आई एग्री करता हूँ कि मतलब जैसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन अ नॉर्मल हैप्पी फैमिली वो जो पैसा होता है वो मतलब एटलीस्ट दे गेट टू डिसाइड कि उसे क्या करना है, नॉट ओनली द मैन, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैन अकेले भी डिसाइड करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नहीं, हमेशा ही होता है, और लेडीज को लिबर्टी नहीं है, उस पर वर्कलोड ज्यादा है। जॉब भी अगर लेडी करी, दोनों काम कर रहे, तो वाइफ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बच्चे की पूरी देखभाल करेगी। जी मैम, लेकिन फिर जैसे घर के बाहर के जो काम होते हैं जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैन उसको करे, प्रॉब्ली ये उस तरीके से डिवाइडेड है। और उसमें प्यार भी नहीं देखा जाता, बिजली के बिल जमा करने में और वो लाने में, खाना नहीं, अब बनाने में सिर्फ ऑनलाइन प्यार होता है देखा सर, जाता है। ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऑनलाइन अब तो वो काम भी महिलाओं को मिल गया, ऐसी बात नहीं है, बाहर के काम भी अब तो महिलाएं कर रही हैं। और सर ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बैठ के बिजली बिल जमा कर दीजिए ना। हम लोग के कॉलेज में तब जो भी बाहर जितने के सर बहुत है काम ना, होते उन लोग का काम है एग्जाम हैं। ड्यूटी के समय चाय पीना और सिगरेट पीना बाहर गैलरी में निकल के, हम ही लोग रूम में रह जाते लेडीज। तो मैम मैडम देयर इज वन मोर, देयर इज वन मोर मनोज सर सॉल्यूशन, तो बहुत जो स्ट्रिक्ट कि है। एक ऐसे मारवाड़ी लोग बात कॉलेज का करते भी हैं वही मैम, एक प्रिंसिपल है ना। एक बहुत ही मैम ना मैं पूरा ऐसे अपर बता रहा बाजार हूँ घूमिए, आपको किसने रोका है आपको? तो मनोज सर तो बहुत मैम, स्ट्रिक्ट है। फाइंड मैं आउट उनके सम अंदर काम किया हूँ 3 सबमिसिव महीने। हस्बैंड, वो आपके सारे काम कर देगा। मैं कोई उनके अंदर सबमिसिव 3 हस्बैंड महीने फाइंड काम करिए, किया हूँ जब वो वो बिरसा आपके कॉलेज सारे में काम कर देगा, बट देन आए यू थे वोंट लैब लाइक हिम, करवाने। दैट इज ऑल्सो देयर। सर मतलब सर अगर अगर आदमियों ऐसा में हो, देखेंगी, मतलब देर आर सम लिटरेट, देर आर सम इलिटरेट पर्सन, जो कि एक सबमिसिव वाइफ ले लेगा कि ठीक है वो मेरे सारे काम करेगी, दो दे आर इलिटरेट, मैं उसकी आई मतलब दो सी इज इलिटरेट, आई टेक केयर ऑफ हर। लेकिन वीमेन के साथ ऐसा नहीं कि वो एक सबमिसिव हस्बैंड ढूंढ ले कि ओके ठीक है वो इलिटरेट है, मे बी वो मेरे साथ समाज में नहीं रह सकता, बट मैं वो मेरे सारे काम तो करेगा, एटलीस्ट ही विल लिसन टू मी। वो साथ भी नहीं है, तो सही प्रॉब्ली है। बहुत सारा डिफरेंस रिप्लाई है। मैं देना चाहती हूँ प्लीज सर, इसका रिप्लाई मैं देना चाहती हूँ। ठीक है, आपने जो कहा वो बात ठीक है, पर क्या जो वुमेन जो सारे काम करती है, अगर वुमेन वर्किंग है और हस्बैंड नॉन वर्किंग है, तो क्या जो वुमेन वर्क करती है वो सारे के सारे मैन वर्क कर सकते हैं? मतलब जैसे घर का डस्टिंग, नहीं नहीं झाड़ू मैम, पोछा, ये तो खाना यही तो मैं बनाना। कह रहा हूँ, आप कंडीशन रखिए, आप कंडीशन नहीं रखिए, नहीं, आपकी बात सही है, ऐसा हाँ हुआ है कि कंडीशन में वीमेन बाहर भी करती है, अंदर भी करना पड़ता है। नहीं आई सर, ये एग्री तो विद यू। हमेशा ही होता है, हम घर भी करेंगे बाहर भी करें, दोनों जगह एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना गर्ल से। तो अगर मैडम सर तो मैम एक यू टेक ऐसी चार्ज ऐसी ऑफ योर वुमेन लाइफ ढूंढ इन योर ओन दीजिए, हैंड। ठीक ना, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ कि जो बाहर का सब काम करे, मैं सर नौकरी वो छोड़ने को तैयार पर्सनल हूँ। है, आप ढूंढ लीजिए खुद, कहाँ से कोई और ढूंढेगा। अमित जी अपना बायोडाटा भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए। नहीं, पर सर बायोडाटा ऐसी भी सर गर्ल्स हैं जो कि ना पूरा काम करना चाहती हैं, पर वो घर का काम नहीं करना चाहती, ऐसी भी गर्ल्स मैं बहुत सारी होती हैं। किचन वर्क कर दूंगा, सारा हाउस चोरा सारा कर दूंगा। आप मुझे भेजिए, अपनी कुंडली भेजिए, देखा जाएगा। हाँ, निखिल जी, ये बहस रास्ता लेकिन कैसे बदल गई? लेकिन घर के भीतर इतने निखिल सवाल जी, मत कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। नहीं, मनोज जी निखिल को जी, दूसरी ही टाइप की महिला चाहिए। तो मनोज सर क्या नहीं, हो गया कौन उनको? है? अमित जी, अमित जी। अमित जी को हाँ, ये भी देखा गया है कि जो बहुत एलीट क्लास होता है, तो उसमें फीमेल्स जो है शादी करती है ऐसे पति से, मूक पति से, और जो बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है उसको मूक पत्नी चाहिए। ये तो बहुत पुरानी नहीं, कहावत है कि इट इज ऐसा गुड मैरिज इज वन इन आप विच द लोग हस्बैंड मुद्दों इज मुद्दे से सर भटके डन हैं। बाय हिज वर्क। आजकल लोग अमित जो जी को कलीग्स हो रहे मूक पत्नी चाहिए। आप ना लोग मैडम, मुद्दे से भटक गए हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं। यदि अमित मूक बनने के लिए तैयार है क्या? हम तो बोल रहे हैं कि हम पूरा हाउस पूरा संभाल लेंगे, हमको छोड़ दे खाली, फिर जाके कमाना है। नहीं, नहीं सकिएगा ना, क्वालिटी नहीं है ना। नहीं सर, उसमें फिर उसका आपको वो लोग भी सिर्फ देखना मुद्दे भाई से पड़ेगा आपके भटक कि पहले गए जैसे हैं। अगर किया लड़की, हो तो सर एक बात कोई सुनिए टूल अमित दीजिए सर, अब तो। अगर लड़की आपके पेरेंट्स की केयर करती है तो आपको भी लड़की के पेरेंट्स की और खुद के पेरेंट्स की भी केयर करनी पड़ेगी।
अमित जी आप ससुराल जाइए, ठीक है, केरल में शादी कीजिए प्लीज। केरल में? हाँ उधर उल्टा, अभी मैम ने कहा ना कि उधर उल्टा होता है, लड़के ससुराल जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोबेबली मुझे लगता है किसी छोटे मोटे, मुझे लगता है सब सोसाइटी हाँ में सही भी बात ऐसा है, नहीं है जो वो मैम ने बता रही मिसरीड है। कर लिया, ऐसा है नहीं, ऐसा हो तो ज्यादा क्रांति आती। जी बिल्कुल, वो पता नहीं क्या नहीं सर, बताते इधर रहते हैं। साइड मतलब है, मैं मिजोरम बहुत साइड सारे में, मेरे मिजोरम दोस्त हैं, असम कभी साइड किसी में ने है ऐसी सर। बात नहीं करी। नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी और उनके साथ ऐसा कल्चर था, मतलब बहुत रेयर है, मतलब आदिवासी समुदाय में देखा है मैंने झारखंड में, बाकी नहीं पता। कुछ ट्राइब्स में है ये कि वो शादी के बाद जाते हैं, कम अंडर पीवीटी जी। पड़ा है नायर, मैम ये ट्राइब्स में ही है। ट्राइब्स में ही है कहीं जी, नहीं, हाँ, ट्राइब्स में में ही देखिए, मैं झारखंड से हूँ तो मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। आदमी हड़िया ताड़ी पी के पड़ा रहेगा और औरत जो है खेत में भी काम करेगी, बच्चा को बेतरा में पीठ में बांधेगी, खेत में काम करेगी, हर काम करेगी और आदमी हाथ भी पड़ा जाएंगे। रहेगा। बहुत मतलब मेन यही है जी ट्राइबल का कल्चर। और हरियाणा में लेडीज पूरा खेत में काम करेंगी, जानवर गाय भैंस ट्राइबल दूध है। मैम सिंगल फादर लोग के लिए थोड़ा सा और सहानुभूति वो रखिए लोग आप हुक्का लोग। पीते, आदमी बैठ बैठ के ग्रुप्स में हुक्का पीते। हरियाणा में मैंने ये देखा। थोड़ा सिंगल फादर्स के लिए भी सहानुभूति रखी जाए। एकदम सहानुभूति। भारत में तो ये है कि सिंगल फादर यदि आप हैं तो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, यदि मेल है तो। मेल तो नहीं, जी, मेल को सही कहाँ है। लाऊं? मेल नहीं सिंगल अडॉप्ट कर फादर बोल रहा सकता हूँ, सिंगल आदमी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है अमित सर। क्योंकि सर देखा गया 21 एक्सप्लॉयटेशन, तो क्या ईयर्स का किया एज जाए, उसका गैप कुछ होना उपाय चाहिए नहीं है। बस। तो वो भी चाइना में और कोरिया में क्लॉज कब लगता है डेमोग्राफिक आपको? स्टडी एज में गैप देखा होना गया है। चाहिए सर। आप एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, बस मैडम लिंक भेज आपके। दीजिएगा, मुझे अडॉप्ट करना है सही में। हाँ बिल्कुल, लिंक भेज आप दीजिए। आपको क्या क्या करना है मित्र? शादी करना है, पहले साफ हो लीजिए, पहले करना शादी क्या तो है? नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा कम से कम। आप बच्चे की शादी कर लीजिए, कर दीजिए। आप उसी की एज शादी पर हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के प्रोविजंस के अंडर आप कर सकते हैं बिल्कुल। कोई मैंने भी नहीं मैम, मेल ऐसा नहीं है, अनमैरिड रजिस्ट्रेशन पर्सन करनी नहीं है। कर सकते। नहीं, ना बिल्कुल कर अनमैरिड सकते हैं। पर्सन या कोई भी सिंगल आदमी कोई भी किड अडॉप्ट नहीं कर सकता। वो मैं भी एक्सप्लॉयटेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा बनाया गया कल है। के लिए ढूंढ रहा था, नहीं सर मिला मुझे। मैं एपीएन पीजी कॉलेज में लॉ ही पढ़ाती हूँ और मैं जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी हिंदू सिंगल, आप जान ही रहे हैं, सुष्मिता सेन ने अडॉप्ट किया हुआ है, आप जान रहे हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी। सुष्मिता सेन महिला है मैडम। हाँ, आप ये भी देखिए मैं मैडम। पुरुष की बात बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि अलग अलग अप्लीकेबल हो, महिलाओं पे अलग नहीं मैडम, अप्लीकेबल ये हो। शायद ये लॉ है, क्योंकि मैंने चेक किया था एक बेबी गर्ल के लिए, तो मुझे नहीं मिला। बहुत सारे बता तो क्लॉजेस रही थे हूँ, जिसमें। मैं बिल्कुल बताती हूँ सर। अगर आप सिंगल हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके और उस चाइल्ड के बीच का एज डिफरेंस 21 ईयर्स होना चाहिए। चाइना में, कोरिया में ना आदमी काम नहीं करते, तो वहां पे गर्ल्स जो है वो लोग शादी ही नहीं कर रही हैं। उन लोगों ने डिनाई कर दिया शादी करने से। मजहर तक चले गए क्या ग्रुप छोड़ के? क्या मैम अभी क्या नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, पता नहीं। जापान और में एक भी चीज शादी और नहीं आप करते लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, डेमोग्राफिक स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग जो कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्चुअली अभी बढ़ नहीं रही है। अभी जो है 1.8 बच्चा ही पर कपल पैदा हो रहा है, और किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन उसका रिसोर्सेज है। तो हम लोग बहुत बेवकूफी से ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत बड़ा रिसोर्स है। और पॉपुलेशन पहले ही बढ़ रही थी, जैसे कि बहुत सारे पेड़ है लेकिन उसमें फ्रूट्स जो है वो कम कम लग रहे हैं। ग्रुप पे मैं बहुत बार देखती हूँ कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन बहुत प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रिसोर्स है। और थोड़े दिन के बाद ऐसा होगा, चाइना वाली हालत इंडिया में भी हो जाएगी कि बच्चे जो है, एक बच्चे पे 2 पेरेंट का लोड होने वाला है, ये चीज। और फिर आगे होगा, हम दो हमारे दो से हम दो हमारे एक हुआ, फिर हम तुम्हारे तुम हमारे होगा। और फिर उसके बाद तुम कौन मैं कौन? फिर पेट्स रखेंगे लोग। अब तो पेट्स भी रखते हैं ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जापान में ज्यादा प्रचलित है। आज का क्लास बहुत रोचक रहा, नहीं? ठीक चलिए है तो सर। थैंक यू।